Hello friends, welcome to Civil's Manthan. We shall discuss today's important news articles. Now coming to the first news article, that is the Ministry of Defence has issued the draft of the defence export policy. So we will be seeing the important points of the policy, of the draft of the policy. So with the aim of achieving a manufacturing turnover of 25 billion or of 1,75,000 crores, including exports of 5 billion in aerospace and defense goods and services by 2025. The Ministry of Defence has put out a draft of the defense production and export promotion policy. So ये पॉलिसी का नाम है डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी, जिसके अंदर गवर्नमेंट का टारगेट है 2025 तक 25 बिलियन टर्नओवर, और दैट इज़ विच इज़ अराउंड 1,75,000 करोड़ का मैन्युफैक्चरिंग टर्नओवर अचीव करना है, इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट्स ऑफ 5 बिलियन इन एरोस्पेस एज वेल एज डिफेंस गुड्स एंड सर्विसेज. सो एक्सपोर्ट्स का टारगेट है 5 बिलियन. सो द DPEPP is envisaged as overarching guiding document of the Ministry of Defence to provide a focused, structured and significant thrust to our defence production capabilities. So हमें पता है कि हम India imports a lot of the defense goods or including weapons. So the Ministry of Defence is trying to achieve the indigenous capability for the production of the defense products, which is also a part of the Atmanirbhar Bharat project of the government of India. So the share of the domestic procurement in overall defense is about 60%. So अभी जो domestic procurement है उसका contribution है 60%. In order to enhance procurement from domestic products industry, it is incumbent that the procurement is doubled from the current 70,000 crore to 1,40,000 crore by 2025. So these are some of the targets under the draft of the DPEPP. Now, on increasing defense exports, the policy states that the defense attaches have been mandated and are supported to promote export of indigenous defense equipment abroad. So जो defense attaches है various councils में, various embassies में इंडियन गवर्नमेंट का जो कि बाहर है, उनका काम होगा कि इंडिजिनस डिफेंस इक्विपमेंट को वो प्रमोट करें, एज वेल एज दे ऑल्सो try to enhance their contribution in the export of this indigenously built defense goods. Okay, and यहाँ पे डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, फॉर एग्जांपल HAL हो गया, DRDO हो गया, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दिस डिफेंस गुड्स. Moreover, subject to strategic considerations, domestically manufactured defense products will be promoted through the government agreements and line of credit funding. So these are some of the ways in which the government will try to promote indigenous defense exports. Moreover, this policy also covers the exports of aerospace industry. The opportunities in the aerospace industry have also been identified in the following segments. क्या segments है? Aircraft build work, aircraft maintenance, repair and overhaul (MRO), that is helicopters, engineering manufacturing, MRO work, line replaceable unit, unmanned UAV, upgrades and retrofit. So these are some of the sectors in the defense aerospace defense industry which the government of India will try to promote. And also a project management unit PMU will also be set up for estimation of development and production lead times, specifications and technology involved. So these are some of the important points of the draft defense production and promotion export policy. Now coming to the next news bit, that is the परचेजिंग मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स. सो यह प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है PMI, बिकॉज ए लॉट ऑफ टाइम्स इन द न्यूज़पेपर वी कीप ऑन सीइंग दिस परचेजिंग मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स. सो देखते हैं ये PMI होता क्या है. सो इट इज़ डेवलप्ड बाय ए US बेस्ड इंस्टीट्यूट, दैट इज़ इंस्टीट्यूट ऑफ सप्लाई मैनेजमेंट, एंड इट हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट क्लोजली वॉच्ड इंडिकेटर्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ अक्रॉस द वर्ल्ड. सो यह किस चीज़ को दर्शाता है? बिजनेस एक्टिविटीज़ को बेसिकली. So it is an indicator of business activity both in the manufacturing and the services sectors. So ये दोनों सेक्टर को कवर करता है. It is a survey based measure because यहाँ पे यूजली प्राइवेट कंपनी के जो हेड्स होते हैं या फिर प्राइवेट कंपनीज के जो ऑपरेशंस के जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. उसके बेसिस पे ये PMI निकाला जाता है. It is calculated separately for the manufacturing and services sector
and then a composite index is constructed. Now so इसमें पैरामीटर्स क्या क्या है, 5 क्वेश्चंस हैव टू बी स्कोर्ड इन दिस मैनर, दैट इज न्यू ऑर्डर्स, उसका वेट है 30%, आउटपुट 25%, एम्प्लॉयमेंट 20%, सप्लायर्स डिलीवरी 15% एंड स्टॉक ऑफ परचेजेस 10%. सो दीज आर द 5 पैरामीटर्स ऑफ दिस PMI हैविंग डिफरेंट वेट्स. सबसे ज़्यादा वेट है न्यू ऑर्डर्स का. दिस क्वेश्चनर इज एडमिनिस्टर्ड टू 500 प्राइवेट सेक्टर कंपनीज and the comprehensive score is arrived at. The public sector is left out, so it doesn't take into account the public sector, जो कि बहुत important चीज़ है, हमें याद रखना चाहिए स्पेशली प्रीलिम्स के लिए. Now coming to the next news bit, that is SpaceX with NASA crew is back home. So जो एलन मस्क का जो टेस्ला कंपनी है, SpaceX भी है उसका जो, तो SpaceX is commercially launching space capsule to the International Space Station, thus carrying supplies. So the 2 NASA astronauts have come back using the SpaceX company's capsule or the space vehicle. It was first, so ये कहाँ गिरा, this fell down into the Gulf of Mexico. It was the first splashdown by the US astronauts in 45 years, with the first commercially built and operated spacecraft to carry people to and from orbit. So this SpaceX company है एलन मस्क का, दिस इज़ heavily involved in space operations in collaboration with NASA. So 2 test pilots, Doug Hurley and Bob Behnken, returned to the Earth in their SpaceX Dragon capsule named Endeavour. So this is very important for prelims. And they departed the ISS. The capsule parachuted into the calm Gulf waters of about 40 miles of the coast of Pensacola. So ये कहाँ लैंड किया, गल्फ ऑफ पेंसाकोला में. एंड एंड्यूवर इसका नाम था, कैप्सूल का नाम. द लास्ट टाइम द 2 NASA astronauts returned to space to water was on July 24, 1975. So after a gap of very long years, this splashdown occurred. So this was the splashdown of the astronauts. This is the capsule Endeavour. Now coming to the next news bit, that is the EVIN. So EVIN का कॉन्टेक्स्ट, EVIN इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज कोरोना के लिए जो वैक्सीन्स डेवलप हो रहे हैं, द गवर्नमेंट विल यूज दिस सिस्टम फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वैक्सीन्स एज एंड व्हेन इट इज़ डेवलप्ड. EVIN. सो देखते हैं EVIN क्या है. EVIN इज इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क. It is an indigenously developed technology system in India that digitizes vaccine stocks. So ये कंट्री का सारे वैक्सीन का स्टॉक रखता है and monitors the temperature of the cold chain through a smartphone application. So 2 things, vaccine stocks as well as the temperature of the cold chain. The EVIN is presently being implemented across 12 states in India. So it aims to support the government of India's universal immunization program by providing real-time information on vaccine stocks and flows. So basically it will be helpful in keeping the vaccine stock of the country, and this is implemented by the UNDP in partnership with the government of India. So this is very important. UNDP के साथ government of India का collaboration है for EVIN, which basically works for the maintaining the vaccine stock as well as temperature of the cold chain in India, which carries the vaccine. So इससे क्या होगा, it provides an integrated solution to address widespread inequities in vaccine coverage by supporting state government. This is very important. सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को हेल्प करेगा वैक्सीन इम्यूनाइजेशन में थ्रू EVIN. मोरेवर जो कोरोना का जो वैक्सीन निकलेगा उसमें भी EVIN का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा, स्पेशली इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वैक्सीन. एंड ये डेवलप किया है UNDP, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. थैंक यू.